मोड पे जाने वाला हूँ। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस। अब मैं इसको छोटा कैसे करूँ? ऑलराइट गाइस, मैं यही दिखाना चाहता था। अभी आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें जो वैल्यू पुट की गई है वो है आपकी 5, क्योंकि मेरा करंट वैल्यू ही 5 है। एंड देन जो मेरा करंट एलिमेंट है गाइस, इसमें जो पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड इसको हटाता हूँ एंड पेस्ट। ठीक है, दी मोमेंट मैं एंटर हिट करूंगा गाइस, मैं डिबगर मोड पे जाने वाला हूँ। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस। अब मैं इसको छोटा कैसे करूँ? ऑलराइट गाइस, मैं यही दिखाना चाहता था। अभी आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें जो वैल्यू पुट की गई है वो है आपकी 5, क्योंकि मेरा करंट वैल्यू ही 5 है। एंड देन जो मेरा करंट एलिमेंट है वो अभी 6 हो गया है। ठीक है, बेसिकली ये नेक्स्ट स्टेप है। दी मोमेंट में इस तरीके से नेक्स्ट करूंगा। अब देखो रिटर्न पे जब हम जाएंगे ना, तो एक्यूमुलेटर में अभी सिर्फ 5 ही था, लेकिन मेरा जो करंट एलिमेंट है वो तो 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, अभी एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो 5 है यहाँ पे दी मोमेंट ये रिटर्न वाला जो फंक्शनैलिटी चला, अब आप देख सकते हो कि आपकी जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो हो गई है 30। करंट एलिमेंट मेरा अभी भी 6 है, क्योंकि अभी भी हमारा जो पॉइंटर है वो रिटर्न पे ही है। जैसे ही ये रिटर्न गया वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस से डिबगर पे गया। अब आप ध्यान से देखोगे नाउ, अब आपका जो करंट एलिमेंट था वो गाइस अब आपका 2 हो चुका है। एक्यूमुलेटर जो पहले 5 था अब वो आपका 30 हो चुका है। दी मोमेंट में एलिमेंट था करंट एलिमेंट, एक्यूमुलेटर में अभी सिर्फ 5 ही था, लेकिन मेरा जो करंट एलिमेंट है वो तो 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या कर, जो फंक्शन एलिमेंट मेरा अब चला, अब आप देख सकते हो कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो 5 है यहाँ पे दी मोमेंट ये रिटर्न वाला जो फंक्शनैलिटी चला, अब आप देख सकते हो कि आपकी जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो हो गई है 30। करंट एलिमेंट मेरा अभी भी 6 है, क्योंकि अभी भी हमारा जो पॉइंटर है वो रिटर्न पे ही है। जैसे ही ये रिटर्न गया वापस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो वापस से डिबगर पे गया। अब आप ध्यान से देखोगे नाउ, अब आपका जो करंट एलिमेंट था वो गाइस अब आपका 2 हो चुका है। एक्यूमुलेटर जो पहले 5 था अब वो आपका 30 हो चुका है। दी मोमेंट में एंटर हिट करता हूँ, अब यहाँ पे देखो अगेन 30 है, ये 2 है। मैं नेक्स्ट करूंगा गाइस। अब आप ध्यान से देखो ये 60 हो गई। एक्यूमुलेटर में अब आपकी वो जो वैल्यू थी 60 वो ऐड हो गया। करंट एलिमेंट आपका अभी भी 2 है। एंड इस तरीके से हमने कंसोल डॉट लॉग सम कराई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम की वैल्यू मुझे 60 आ चुकी है। इसको मैं जूम, ऑलराइट गाइस, आई थिंक मैं इसको जूम कर सकता था इस तरीके से, है कि नहीं? तो अब आप देख सकते हो
किस तरीके से ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है 60। तो ये है गाइस आपका एक्यूमुलेटर जो किस तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन मैं अब एक और चीज जिसमें आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सपोज अगर यहाँ पे जो पहला मेरा जो वैल्यू था वो 5 है, लेकिन अगर आपको अपना खुद का एक डेटा भी ऐड करना रहा इनिशियल वैल्यू एज अ इनिशियल वैल्यू, तो कैसे? मेरा मतलब ये कि सपोज ये जो है आपके मार्क्स है, ये ठीक है, आउट ऑफ 10 आपको इतने टोटल मार्क्स मिले एंड आपने ये देखा कि एक ऐसा मार्क्स है जो मैं इसमें ऐड करना भूल गया, ठीक है। आई मीन टोटल आपके 4 सब्जेक्ट थे जिसमें से एक का आपको ऑलरेडी मालूम है एंड ये जो बाकी के 3 है ये आपको बाद में रिजल्ट आया। तो आपने क्या किया, चलो ठीक है, ये बाकी की जो मेरे 3 है एंड अभी जो एक ऑलरेडी मुझे मालूम है जो मेरा पेपर है उसका जो रिजल्ट, तो मुझे उन सब का क्या करना है, टोटल सम निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो फिलहाल तो यहाँ पे 3 है, एक जिसका मुझे ऑलरेडी पहले से ही मालूम था, मैं चाहता था कि वो ऑलरेडी इस पे पहले से ही स्टोर रहे एंड उस डेटा के साथ साथ मैं इन तीनों को भी प्लस करके देखूं कि मुझे टोटल कितना बना है। तो गाइस यहाँ पे एकदम एंड में एक कॉमा देना है एंड हियर वी हैव आवर इनिशियल वैल्यू। ये देखिए कॉल बैक फंक्शन के अंदर प्रीवियस नंबर प्रीवियस वैल्यू जो बोलते हैं, लेकिन आपका वो एक्यूमुलेटर है, करंट वैल्यू करंट इंडेक्स आपका एरे एंड लास्ट में वी हैव समथिंग कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। इट मींस कि आपके पास अगर अपना खुद का कुछ पहले से ही डेटा अगर प्रेजेंट है या कुछ डेटा है जो आप एज ए इनिशियल वैल्यू दिखा के इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक मैंने आपको एक कंडीशन दे दी है कि नहीं, सिंपल। मैंने बोला कि मेरे 4 सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे मालूम है कि मुझे मिला है 7, ठीक है, एंड बाकी की जो 3 सब्जेक्ट रह गए, बाकी की जो मेरे 3 सब्जेक्ट रह गए उसका आउटपुट मुझे अभी तक नहीं आया था, उसका मार्क्स मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे टीचर ने एरे के फॉर्म में वो इस तरीके से मार्क्स मुझे सेंड कर दिए। ये मेरा सपोज ये मेरा बाकी के 3 जो सब्जेक्ट है उनका मार्क्स है ये, एंड एक मार्क्स जो है वो मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को इससे मुझे प्लस करना है। अब बात ये है ना कि ये जो 7 है वो तो नॉर्मल एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये तो एक एरे है, तो अब मैं इन दोनों को प्लस कैसे करूंगा? देखो इसको तो मैं बहुत इजीली प्लस कर सकता हूं बिकॉज ये एक एरे है एंड अगर बात होती है सम की, इट मींस एक सिंगल आउटपुट आने वाला, तो मैं रिड्यूस यूज करूंगा एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में प्लस ऐड कर दूंगा। लेकिन इस 7 को अगर मुझे इस पे ऐड करना रहा तो कैसे? अब ये बिल्कुल मत बोल देना कि मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पे ऐड करना रहा तो कैसे? अब ये बिल्कुल मत बोल देना कि मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस एक ट्रिक तो ये है कि मैं सिंपली ARR डॉट इस तरीके से मैं कर दूंगा अनशिफ्ट, क्योंकि मैं एकदम स्टार्टिंग में डेटा को ऐड कर सकता था, है कि नहीं, लेकिन वो भी फायदा नहीं है। लेकिन सिर्फ रिड्यूस से अगर हमें करना हो तो बहुत ईजिली कर सकते हैं एंड दैट इज यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ, दिस इज इट 7। सो नाउ ये जो मेरा 7 है वो मेरा एक इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी पहले से ही 7 जो है वो जमा रहेगा एंड बाकी के ये 3 को वो प्लस कर देगा, ठीक है। इसको मैं अगेन करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे चल के एंटर हिट कर देता हूँ। सी गाइस गाइस मैंने वो ट्राई किया, वो एक्चुअल में हुआ नहीं क्योंकि करंट वैल्यू का हमें वो वैल्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें ऑलरेडी 7 डेटा आ चुका है, पे चलता हूँ जो वो जमा रहेगा, वो मेरा एक इनिशियल वैल्यू एंड दैट इज यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू दे सकता हूँ, दिस इज इट 7। सो नाउ ये जो मेरा 7 है वो मेरा एक इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होगा कि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी पहले से ही 7 जो है वो जमा रहेगा एंड बाकी के ये 3 को वो प्लस कर देगा, ठीक है। इसको मैं अगेन करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे चल के एंटर हिट कर देता हूँ। सी गाइस गाइस मैंने वो ट्राई किया, वो एक्चुअल में हुआ नहीं क्योंकि करंट वैल्यू का हमें वो वैल्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब आप खुद देख सकते हो कि मेरा जो एक्यूमुलेटर है उसमें ऑलरेडी 7 डेटा आ चुका है एंड ये जो मेरा 5 है जो मेरी पहली करंट एलिमेंट हुआ वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यही सबसे औसम बात है कि ऑलरेडी 7 प्रेजेंट है। अब मैं अगर नेक्स्ट पे चलूंगा, ये जो रिटर्न है एक्यूमुलेटर पे मैं जाऊंगा तो देखो गाइस 7 + 5 आपका एक्यूमुलेटर हो गया 12, करंट अभी भी 5 है। द मोमेंट मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो अब मेरा जो करंट एलिमेंट वो हो गया मेरा 6, मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। अब वापस बैक करूंगा तो देखो अब मेरा जो करंट एलिमेंट नॉट बैक मतलब नेक्स्ट, तो मेरा जो करंट एलिमेंट है वो 18 हो चुका है। अब ये 18 मैं वापस नेक्स्ट जाऊंगा तो मेरा जो करंट एलिमेंट अब वो 2 हो चुका है, जो लास्ट डेटा है मेरा एलिमेंट, एंड अब 18 + 2 विल बी इक्वल टू योर 20 एंड
एंड दिस इज इट। अब ये मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस तरीके से गाइस मैं अगर कंसोल पे दिखाऊं तो मुझे 20 आउटपुट आ रहा होता है, एंड यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँ एंटर हिट करूँ तो मुझे इस तरीके से 20 आउटपुट आ रहा होता है। सो गाइस ये है आपका रिड्यूस मेथड, एंड आई रियली होप आपको बहुत पसंद आएगा। एंड मैंने ये वाला जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाया गाइस, दिस इज मोर देन इनफ। ये है आपके प्रोफेशनल कैसे काम करता है। अगर आपको ये लग रहा हो कि इसमें यार ये कौन बता रहा है, ये बता रहा हूँ, मैं खुद 3 साल मैंने आईटी में वर्क किया, मैंने देखा है कैसे काम हो रहा है वहां पे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको खाली समझना है, आपको खाली समझना है कि काम कैसे हो रहा है। वंस आप कंपनी में चले जाओगे वहां पे आप धीरे धीरे खुद ही समझोगे यार। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कि ऑन द स्पॉट समझता हो। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा, आप समझते जाओगे। यही लाइफ का लेसन है। ऑन द स्पॉट कोई नहीं, आज के टाइम में भी बिल गेट्स डेली पढ़ ही रहे है कि नहीं, वरना वो तो बोल सकता था ना कि मेरे को तो
तो अब सब कुछ आता नहीं, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। डेली में भी हो सकता है कि कल के टाइम इसको भी हम और सॉर्ट कर सके, कुछ ऐसा भी निकल सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा काम कैसे हो रहा है, ठीक है। और गाइस तो हमारा रिड्यूस मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ रह गया या नहीं, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ। चैलेंज टाइम ये हमने देख ली थी। ऑलराइट गाइस, स्ट्रिंग देखने से पहले मैं बताना चाहूंगा एक चीज यहाँ पे रह गया है, एंड दैट इज जो हमारा मेन था कि हम फ्लैट कैसे करेंगे एरे को। मैंने जो आपको पहला डेफिनेशन बताया, एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हाउ टू फ्लैटन एन एरे। गाइस ये भी आपका एक प्रैक्टिस, एक चैलेंज है, ठीक है, जहां पे अब हम 2D या 3D एरे को कैसे वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पहला डेफिनेशन बताता है, एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख, जो हमारा मेन था कि हम फ्लैट कैसे करेंगे एरे को। मैंने जो आपको पहला डेफिनेशन बताता है, एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हाउ टू फ्लैटन एन एरे। गाइस ये भी आपका एक प्रैक्टिस, एक चैलेंज है, ठीक है, जहां पे अब हम 2D या 3D एरे को कैसे वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसका क्या मतलब होता है गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मेरे कुछ डेटा है देखो, तो ये जो मेरे डेटा है इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे, बिकॉज इट्स एन एरे एंड एज एन एलिमेंट। जहां अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली एक एलिमेंट ही देख रहे थे नॉर्मल, उसमें भी एक और एरे आ गया। तो पहले इंडेक्स नंबर पे वी हैव वन मोर एलिमेंट, आई मीन वन मोर एरे। सो दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे, एरे ऑफ एन एरे, इसको हम बोलते हैं एरे ऑफ एन एरे, ठीक है। सिंपल, इतना मेरा काम हो चुका है। मुझे क्या करना है गाइस, इसको मुझे सिंपल इस तरीके से दिखाना है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, बेसिकली ये जोन मतलब अलग अलग दिखाना है, एक 2D में नहीं, एक सिंगल वन डायमेंशनल एरे में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा देखो, और वो रिड्यूस मेथड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है, ठीक है। और लेट फ्लैट एरे, बेसिकली फ्लैट एन एरे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ARR डॉट रिड्यूस में यूज करूंगा सिंपल। मैं यहाँ पे चलूंगा इस तरीके से। गाइस हमें मालूम है फैट एरो फंक्शन, तो मैं उसको पहले डिफाइन कर दूँ इस तरीके से, परफेक्ट। नाउ हमें मालूम है कि इसके अंदर आपका एक्यूमुलेटर रहता है, तो मैं दिस टाइम सिर्फ एक्यूम लिख रहा हूं, आप समझ जाओ इट्स एन एक्यूमुलेटर, एंड हमारा जो करंट वैल्यू होगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकंड, कहाँ गया हमारा कर्सर, ऑलराइट परफेक्ट। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं करूंगा इस तरीके से रिटर्न। एंड अब देखो ये जो मेरा डेटा है एक्यूमुलेटर, इसमें हमारा हर बार का डेटा स्टोर हो रहा होता है। सो एक्यूमुलेटर डॉट आपको कॉन्कैट मेथड यूज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, हमें कॉन्कैट का कोई सजेशन नहीं आ रहा, बट इट डजंट मैटर। कॉन्कैट बेसिकली हमने ऑलरेडी देख लिया ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन याद है, प्लस साइन यूज कर रहा था, तो हेलो एंड वर्ल्ड अगर मैं कॉन्कैट कर दूं तो हेलो वर्ल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सेम वही मैं कॉन्कैट करना चाहूंगा मेरे करंट वैल्यू को, एंड अब मुझे क्या करना है, एज इट इज रख देना है। तो नाउ अब मुझे जो एक न्यू एरे मिल रहा होगा ना, बेसिकली रिड्यूस करने के बाद, ये क्या है, एरे ऑफ एन एरे है।
मुझे इसको रिड्यूस करके सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा क्लियर कट हो रहा है। एरे में सब कुछ हमने देखा। सर्च के लिए सर्च ही है, फिल्टर के लिए फिल्टर मेथड है, लूप के लिए फॉर ईच है, मैप है, अपना अलग अलग है। चेन चलाना हो तो मैप यूज करना है। उसी तरीके से किसी चीज को एक सिंगल डायमेंशनल, नॉट सिंगल डायमेंशनल, सिंगल आउटपुट में दिखाना हो तो हम रिड्यूस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ console.log, ये जो मेरा फ्लैट ARR है, अब मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, इतना मैंने लिख दी। यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस। एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से मैंने यहाँ पे कमेंट आउट नहीं किया यार। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कहीं पे कुछ एक और जगह पे कमेंट नहीं किया हुआ मैंने, इस जगह पे भी इसको भी कर देता हूँ कमेंट, और कहाँ ये यहाँ पे। अब गाइस अब सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, CLS करता हूँ एंड बूम। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So what happened? I think in the last class, after 100 students, and students are unable to join the meeting. So I have just updated it. Now you all can join the meetings. One thing. Second, those who have informed me, I have updated their attendance also for that day. So what we were discussing in the last, which module we were discussing? गाइस एंड गाइस आप देख सकते हो कि हमें एक रेफरेंस एरर आ रहा है, एंड दैट इज फ्लैट। एक सेकंड, फ्लैट लिखा ही नहीं इन्होंने। फ्लैर एरर ही क्या चीज होता है? ऑल गाइस, एक्चुअल में हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर। We were talking about the second module. फ्लैट ARR, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फ्लार करके कुछ तो भी लिख दिया, तो इसको मैं हटाता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, CLS एंड बूम गाइस। सी नाउ सब एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज गाइस, अगर कल के दिन इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड ये जो मेरा पार्ट है इसको हटा के अगर मैं एक और एरे, एक और सब एरे, अब हम इसको नेस्टेड एरे भी बोलते हैं, अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, तब भी क्या ये इसको रिड्यूस कर सकेगा? क्या सिंगल एलिमेंट्स हमें मिलेगा? गाइस क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हो, मिलेगा या नहीं? ऑलराइट, लेट्स सी फाइंड आउट कर लेते किसका क्या जा रहा है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, नहीं कर सकेगा। दैट्स व्हाई गाइस मैं आपको तब से बोल रहा हूं कि आफ्टर ECMAScript 2020, जी हां गाइस 2020 में ही ये रिलीज हुआ है न्यू फीचर, जिसके थ्रू अब आपको रिड्यूस मेथड यूज ही नहीं करना अगर फ्लैट करना हो। एक मेथड आया है, उसमें हम आगे देखेंगे जब हम ECMAScript 2020 देखेंगे। सिर्फ एक मेथड में कॉल करूंगा, चाहे एक हो, दो हो, हजारों नेस्टेड, मतलब एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर एरे के अंदर इतने भी कुछ ना हो, एक मेथड काम खत्म, सब बराबर हमें मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइस वो हम आगे देखेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे चलता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, एंड बूम गाइस सी आवर नेक्स्ट सेक्शन इज स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड बिलीव मी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। स्ट्रिंग्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या देखने वाले इसमें। ऑलराइट, ये क्या हुआ अभी जस्ट? ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है क्या क्या नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या देखने वाले इसमें। ऑलराइट, ये क्या हुआ अभी जस्ट? ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एस्केप कैरेक्टर, फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करना हो तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Just go through with the PPT. If you are unable to get it anything from the PPT, you just connect with me. We can have a discussion on that. So I'm sharing the screen, and we'll start the with this decomposition technique. The array for each method executes a given function on every element from another, which requires a callback function. That callback function will be given three parameters: the value at the current step on the loop, the index, and the array which is called upon. So let's create a function and give it here on the for each as a callback array. But console.learn as a core and find something state of implemented index. We can actually write it in console.log the sum. Yeah. Okay. So guys, in the last class, we have talked about software project estimations. Now we'll talk about what is project estimation approaches. So in the project hello? लाइक सेम एरे के अंदर अगर एरे फाइंड करना हो या स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फाइंड करना हो, देन वी हैव सर्चिंग फॉर अ स्ट्रिंग। नाउ अगेन स्ट्रिंग में अगर कुछ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, डेटा को अगर decomposition technique. Decomposition, as the name suggests, decomposition technique means just splitting the big projects into small modules so that a number of users simultaneously can work on that project. So the project estimation approach is widely used decomposition technique.
Decomposition techniques take a divide and conquer approach. Size, effort, and cost estimations are performed in the stepwise manner by breaking down a project into major functions or related software engineering activities. What is the first step? Understand the scope of the softwares to be built, then generate an estimate of the software size, generate an estimate of the efforts and cost by breaking down a project into related software engineering activities, and then reconcile estimates, like compare the resulting values of step 3 and 2. If both sets of estimates agree, then your numbers are highly reliable. So these steps basically will follow in the decomposition techniques. Now we'll talk about basically what it is and what are the basically the approaches we'll use. So before an estimate can be made and decomposition techniques applied, the planner must be understand the scope of softwares to be built and generate an estimate of the software size. The one of the two approaches are used is problem based estimation, another one is the process based estimation. In the problem based estimation, based on the either source line of code or function point estimates, and the process based estimation based on the effort required to accomplish each task. So first one is problem based estimation. So start with bounded statement of the scope, decomposition of the software into problem functions that can each be estimated individually, and then compute the line of code and function point value for each functions. Derive cost or effort estimates by applying the line of code or function value to your baseline productivity matrices like loc or person month, or a function point or function point by person month. So basically in this technique we will drive the efforts in terms of persons months, persons per month, or line of code divided by person per month, or line of function points divided by the person month. Then what basically it is, we'll talk about this through the formula in the upcoming slide. Then combining function estimates to produce an overall estimates for the entire projects. Then problem with then in general the line of code per person divided by person month and function point divided by person month matrix should be computed by the project domain. Important for factors are the team size, application area, and the complexity. So the line of code and function point estimation differ in the level of details required for decompositions with each values. For line of code, decomposition of functions is essential and should go into considerable details. The more detailed, the more accurate the estimation is. So the function and the function point decomposition occurs for the 5 information domain characteristics and the 14 adjustment factors: external inputs, external outputs, external inquiries, internal logic files, and then external interface files. PM requires represents the function person month. Then what is process based estimation? It identifies a set of functions that the software needs to be performed as obtained from the project scope, identify the series of frameworks activities that need to be performed for each function, and estimate the efforts that will be required to accomplish each software process activity for each function. Now what is now the fourth step is apply average labor rates to the effort estimates for each process activity, and then compute the total cost and efforts for each function and each framework activity. Compare the resulting values to both obtained by way of line of code and the function point estimates. If both sets of estimates agree, then your numbers are highly reliable, and otherwise the conduct further investigations and analysis concerning the function and activity breakdown. This is the most commonly used of two estimation techniques like problem and process. Then what is reconcile estimates? So the result gathered from the various estimation techniques must be reconciled to produce a single estimates of efforts, project duration, and the cost. If widely divergent estimates occur, investigate the following cost. First one, the scope of the project is not adequately understands or has been misinterpreted by the planner. And second was the productivity data used for the problem based estimation techniques is inappropriate for the application. So obsolete or has been
misapplied. The planner must determine the cause of divergence and then reconcile the estimates. What is basically now these estimation models divided in different models. First one is the empirical uh, estimation model. What is empirical estimation model? For computer software, usually empirically derived formulas to predict the efforts of a function of LO line of code or function point. Resultant values computed for the LOC and FV are entered into the estimation into an estimation model. The empirical data for these models are divided from a limited sample of the projects. Consequently, the model should be calibrated into reflects local software development. So basically, in this empirical models, what basically we'll do, we will have a previous data of the previous projects. What from that we just train the models, and from that models we can calculate like how much time our project will take. So basically the study will happen on the basis of the previous completed projects, like how much time or how much person or how much efforts will be done in was done in those projects. On the basis we can calculate the efforts of the current project. Then the second one and the important one is this heuristic estimation technique. In this we'll use the COCOMO model, the constructive cost models, to calculate the efforts of. So the COCOMO model is the one of the most widely used software estimation models in the world. It was developed by Barry Boehm in 1981. The COCOMO predicts the efforts and schedule for a software product development based on inputs relating to the size of the software and the number of cost drivers that affect productivity. So basically, through this model, we can calculate the efforts and schedule. It means the time in which we can complete the project. Efforts means the number of persons we require to complete the project, and schedule means the time we require to complete the project. So COCOMO means the primary cost driver is the number of delivered source instruction DSI and the kilo line of code developed by the project. So the COCOMO estimates assume that the project will enjoy good management by both the developers and the customers. Assumes the requirement specification is not subsequently changed after the plans and requirements phase. Now, basically this COCOM model is divided in three categories. First one is the organic or basic type. The software project is said to be organic type if the team size required is adequately small and the problem is very understood and has been solved in the past, and also the team members have been nominal experience regarding the problem. So when we'll apply this first type of COCOM model, organic model or basic model, when the problem size is small and already we have worked on the same project earlier, and the worker or the developer which will work on these projects are very well known about the problem earlier also. Then the second one is the semi-detached or intermediate COCOMO model. So the software project is said to be semi-detached type if the vital characteristics such as team size, experience and knowledge of the various programming environment lie in between that organic and embedded. So it means the size of the project is the average of this organic and embedded, or it means it is an intermediate level. Then we can apply this semi-detached or intermediate level COCOM model. Then third one is the embedded, the software project requiring the highest level of complexity, creativity and the experience requirement fall under this category. Such software requires a larger team size than the other two models, and also the developer need to be sufficiently experienced and creative to develop such complex model. So if the project size is too much, if the line of code is beyond 400, then we require COCOM model, which is known as the embedded model or detailed COCOMO model. Now one by one we'll talk about. So COCOM model has divided in three category based on their complexity. First one is the basic COCOM model, intermediate COCOM model and detailed COCOM model. Now very first one is the basic COCOM model. So the basic COCOM model estimates the software development effort using only a single predictor variable size in DSI and three software development models.
So basically, the size of the COCO model is small. The size of the application or product is small. Then we will apply this basic COCO model. Now, how will calculate it? What are the sizes or efficiencies are there? We will talk about this in this slide. So basically, the COCO model equations text for calculating the efforts. The formula is A by B, kilo line of code, की power b by b. So here what is a by b and b by b and c by b and d by b is in the organic mode or the basic mode. The value of a by b is 2.4, the value of b by b is 1.05, and the value of c by b is fixed for all the models. In all the basic, intermediate and detailed model, it is fixed 2.5 only, and for the value of d by b is 0.38. Same as in the semi-detached model, the value of a by b is 3.0, the value of b by b is 1.2, 1.12, and the value of d by b is 0.335. And in the embedded model, the value of a by b is 3.6, the value of b by b is 1.20, and the value of d by b is 3.2. How you'll remember this? See, in all these three models, the value of a by b and the b by b is increasing towards from basic models to the detailed model, and in the value of d by d is decreasing from basic models to the embedded model. Now these values are fixed. You will apply these values to calculate the efforts. In the efforts, the value of the a by b is the coefficients. The KLOC represents the kilo line of code, where the D is represents the deployment time, E represents the efforts, SS represents the staff size, like how many person he requires to complete the, and P requires the productivity. So these are the fixed formula. Now we'll calculate these for the efforts for one project. So for example, the suppose that the project was estimated to be 400 kilo line of code. So suppose we are working on one projects in which total 400 kilo line of codes are there. So to calculate the efforts and development time or schedule time for each of these three models, or organic, semi-detached, and embedded, then the solution is, these are the two formulas that you will apply in the COCOMO model. First, for calculating the efforts, a by b multiplied by kilo of line code power b by b, and for calculating the deployment time or schedule, the formula is a by c by b multiplied by e to the power d by b. So let's calculate the efforts and deployment time for the basic model or organic model. Then 2.4 is the value of a by b, 400 is the line of code, and the power, the value of b by b is 1.505, which we have taken from this previous table. It is fixed only. So after calculating, applying this, when we have calculated this formula, these values, that number of person per month we got is, so for this completing the project we required approx 1296 persons per month. And what is the deployment time we got? 38.07 months we require to complete these projects if we have applied this. So basically, this COCOMO model will tell you what is the effort and what is the time you require to complete these projects. Then in on the basis of that, we can calculate the price of the project. In semi-detached model, if the project size is quite bigger than the smaller one, then you will apply the semi-detached model, in which the values will change. The value of a by b and the value of b by b, same as the value of c by b, will change on the basis. In semi-detached, the time will the person you will require in this model is approx 2463 persons per month you required, and 38.45 months you require to complete the project. And if the project is embedded in the if you have applied the embedded COCOMO model, then total for 4773 persons per month you required, and 38 approx 37.59 months you required to complete the project. So like this you can calculate the efforts and schedule through the COCOMO models. Now which COCOMO model you have to apply, it's totally up to you. If the project size is bigger, if the line of code is more than 400,
is less than 400, then you'll apply the organic. If it is more than 400, then you'll apply the semi-detached. And if it is more than beyond 1000, then you'll apply the embedded mode. Now move to the next. So this is the formula, as I told you, for calculating the efforts, or for calculating the person per month you required. You calculate the efforts, and for calculating the schedule or time to deployment the project you want to calculate, then the formula is this. Now let's talk about the intermediate model. We have already talked about the basic model, or organic model. Now we'll talk about the second model, which is the intermediate model. So intermediate model, the basic COCO model, assume that the effort is only a function of a number of lines of code and some constraints evaluated according to different software systems. However, in reality, no system's efforts and schedule can be solely calculated on the basis of lines of code. For that, so various other factors such as reliability, experience, and capacity, these factors are known as the cost drivers, and intermediate model utilize 15 such drivers for cost estimates. So basically what happens in the first one, which is organic or basic model, we only calculates the efforts and schedule on the basis of line of code only. But in the intermediate model, we add on some other factors also, like some other driver cost drivers, 15 cost drivers in the formula for calculating the efforts and schedule. So we can say the time, or the effort or the schedule that intermediate model will tell you is more better than compared to basic model or organic model. Then move to the next model, which is the third model, detailed model, or we can say, what is the other name, embedded model. So the detailed COCOMO model incorporates all the characteristics of the intermediate version with an assessments of the cost drivers impact on each step of the software engineering process. The detailed model uses different efforts multipliers for each cost driver attributes. In detailed COCOMO, the whole software is divided into different modules, and then we apply COCOMO in different modules to estimate efforts and then sum the efforts. The 6 phases of detailed COCOMO model are planning and requirements, system design, detailed design, module cost and test, integration and test, cost constructive modes. Now see, this detailed model is the extend model of the extend version of this intermediate model, COCOMO model, in which basically this model will use when the project size is too big. So instead, in this model, with the efforts, the formula of efforts and schedule, we also attach some other things, components like planning and requirements, system design, detailed design, module costs and test, integration and test, and cost constructive modes to calculate the efforts and to calculate the efforts and schedule. Now, so COCOMO stands for Constructive COCOMO Model, introduced by Barry Beham in 1981 in his book Software Engineering Economics, become one of the well-known and widely used estimation model in the industry, and it has evolved into more comprehensive estimation model called COCOMO 2. The COCOMO 2 is actually a hierarchy of 3 estimation models. As with all the estimation models, it requires sizing information and accepts it in 3 forms like object point, function points, and line of source code. What are the cost drivers that the COCOMO model is used for? The personal factors like application experience, programming language experience, virtual machine experience, personal capabilities, personal experience, personal communities, platform experience, language and tool. So basically see, for calculating the intermediate level, for calculating the efforts, I told you now that there are 15 more cost drivers we require, which we apply with the formula for calculating the price and the cost of the project. So basically
decisions. So it is more often it is often more cost effective to acquire rather than develop a software. So basically, make buy decisions is often made based on the following conditions. First one is market about that project will focus on that. So whether we'll make or buy, this decision will take on the following options. So first one is software may be purchased of the sale, and full experience or partial experience software component may be acquired and integrated to meet specific need. And third one is software may be custom built by an outside contractors to meet the purchaser's specifications. So the buy and make decisions can be made based on the following condition. First one, will the software product will be available sooner than internally developed software. So it means the first condition is, suppose we are working on the one software, is that software will be available before we will develop this software. Is this will be condition, on that basis will take the decisions of making or buying this software. Then second one is, will the cost of acquisition plus the cost of customization will be less than the cost of developing the software internally. If this is the case, like for developing the cost which is coming in developing the software is less than the cost of acquisition and customization, then definitely will go for the buying option. And the third one is, will the cost of outside support be less than the cost of internal support. So in that, these are the three factors that will focus for making and buying decision of the software. Then recommendation, do not depend on a single cost of or schedule estimate. Use several estimated technique. So it means the first point is saying, like, after calculating the estimation of the software doesn't depend on the one estimation record. You calculates the multiple estimations using different formulas or different models. Then only you'll get the exact or good estimation cost or the efforts or schedule of that particular project. Then use several estimation techniques or cost models, compare the result and determine the reasons for any large variations, and documents the assumptions made when making the estimates. Then third one is, monitor the projects to detect when assumptions that turn out to be wrong or jeopardize the accuracy of the estimates, and maintain the historical database. So basically, these are the recommendations whenever you will calculate the estimation of the projects. Then what are the conclusion of this effort estimation? The estimation accuracy is directly proportional to the product definition, because before requirement specification, product is very uh, vaguely defined. More efforts, variety of approaches, and complexity of estimations refine them as the project progress, and measures progress and compare it compared to your historical data. Refine. So these are the basic things we'll focus on calculating the efforts of the project. So this is the topics, various topics we have discussed about the module 2. Here we have first focused on very first step of the SDLC life cycle, which is the requirement engineering. We have focused on how we'll calculate, how we'll compiles the requirements of the end users. When the user will come, I'll calculate the feasibility study, how I'll calculate the requirement, how I'll report, make the SRS report, and then we have focused on software effort estimation. The software estimation, we have talked about the decomposition technique, and especially we have talked very first models like the empirical model and the heuristic model. Inside the heuristic model, we have talked about the COCOMO model. Inside the COCOMO model, we have talked about various types of COCOMO model. First one is the basic model or organic model. Second one is the intermediate model, what is the other name, is the semi-detached model, and that the third model is the detailed model or the embedded model. So these are the various COCOMO model we have discussed. Then we have talked about the advantage and disadvantage of the COCOMO model. So here we have finished this second module. Now just a second. I am giving one exercise to you all, guys. It's not an exercise, it's a practical what we can say assignment. uh,
So see, from I'm sharing the syllabus. I hope the screen is visible, you all. We have finished the first module, which is software process models. In this module one, we have talked about various models and what are the use cases of these models, like waterfall model, increment model, process model, evolutionary process model, prototyping spiral model, red model, concurrent model, agile model. So different models we have discussed, and in the second module we have talked about requirement engineering. In the requirement engineering we have talked about um, these various topics. Now there is one assignment, the lab experiments which I'm giving you. See, as you can see, there are two things. First two uh, experiment is course registration system and um, students marks analyzing systems. For these two applications, for these two softwares, you have to develop a complete SDLC life cycle, and you have to develop the UML diagram for these two experiments. Did you get it? I'll upload this as an assignment also. So for these two experiments, first one is the course registration system and another one is the student marks analyzing system. For this, you have to prepare the SDLC life cycle. And you can choose any of the models through which you can develop the complete SDLC cycle, and then you have to prepare the UML diagram for this, and you have to prepare a SRS report using the requirements engineering. It means you have to collect the requirements for these two projects and prepare a SRS report on these two models. Got it, guys? So this is the two experiments. This I'll upload as an assignment also. सर असाइनमेंट अपलोड थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिएगा सर, क्योंकि हम ट्रेन में हैं सर थोड़ा. I'll give the sufficient time. No issue. I'll give the sufficient time for this. ओके सर, थैंक यू But today, before leaving the class, you have to make a UML diagram for this course registration system. You all need to make it. You have to make the UML diagram for this course registration system. You are already aware about what is course UML diagram. You have already studied the C++, in which we have discussed the UML diagram, unified modeling language. So what is so on the basis of that, you have to prepare a UML diagram for this class UML diagram for this course registration system. So you all have to, before ending the class, I'll end the class at 7:30 when I'll receive the course this UML diagram for this class, for this basically course registration system. Got it, everyone? Yes, sir. यस Yeah. सर. Yeah, so you just make the UML diagram for this first experiment, and after that I'll upload the assignment for both these two experiments. You have to make the SDLC lifecycle diagram, SDLC, and requirement engineering, SRH report, and UML diagrams. Later you have to submit it. So I'm just muting myself. You just make the UML diagram for the first experiment. And it's at 7:30 I'll tell you where you have to upload that UML diagram. सर एक्चुअली हम ट्रेन में हैं सर, थोड़ा सा टाइम जरा ज़्यादा दे दीजिए. See, no issue, you can submit it later. You can submit it later, but I'm telling it it is for others. And if you are in train and all, don't join the meetings. In such case, don't join the meetings. If you are at home सर in the condition of studying, then only join the meeting. Now ओके mute सर, yourself. मगर टाइम Mohammed थोड़ा सा Ali, नेट चल mute रहा है. yourself now.
So I have sent the message on the this chat, our chat box. Like you all have to prepare the UML on the course registration system. After completion the UML on this course registration system, share your UML on this chat box, and then you can leave the class. That we have to make on notebook, no? Handwritten UML diagram. It's totally up to you wherever you want to make it. If you're making it in your system, that also be considered. It's totally up to you wherever you're making it, you can, or if you're making it in the notebook, you can take a photo and then upload it. Okay, sir. होता
Sir, Yes, tell me. sir, I made on my notebook, so should I have to upload on Classroom? Yes. Okay. Those who have done, you can upload it and you can leave the meeting. I have your attendance, guys. Sir, I have uploaded. Okay, then you can leave. रहा होता है आपको ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू कुछ ऐसा दे रहा होता है